Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course. In this video, we will be discussing lecture 6 of numerical analysis. This is part of mathematics optional paper 2 and syllabus of UPSC CSE IAS 2024-2025. Let's discuss Gaussian quadrature formula. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course. In this video, lecture 5 of numerical analysis of mathematics optional paper 2 for UPSC CSE IAS 2024-2025 will be discussed. Let's see Gaussian quadrature formula. In the previous video, we discussed Newton-Cotes quadrature formula, and with the help of that trapezoidal rule and Simpson's rule. Here we are discussing Gaussian quadrature interpolation and comparison between these two. With the help of some research, it has been found that Gaussian quadrature interpolation is more accurate, and let's note down the points. Why is it so? Gaussian quadrature is more accurate than Newton-Cotes. First is that both the methods, Gaussian quadrature and Newton-Cotes, they use Lagrange interpolation polynomial to approximate the integrand function. We are doing the integration, and these methods are using Lagrange interpolation polynomial to approximate the integrand function and integrate the Lagrange interpolation polynomial to approximate the given definite integral. And when we use some interval, as we know in numerical analysis, always we use some points on x-axis, that is x size, and function is yi, corresponding values of the function. We call them points or nodes. So if same numbers we take for both the methods, the algebraic degree of precision of Gaussian quadrature is higher than that of the Newton-Cotes quadrature. So ये एक मेजरमेंट का तरीका है कि हम नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ नोड्स को देखते हैं कि किसमें कम लगे, एंड वी गॉट द बेटर एक्यूरेसी. सो सेम में ऑर्डर ऑफ मेथड कैसे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज्ड पर सब इंटरवल. तो इस केस में दोनों ही इक्वल लेने पर देखा गया कि गॉसियन क्वाड्रेचर हायर एक्यूरेसी देता है. एंड इन प्रैक्टिस व्हाट हैपन्स, वी प्रिफर लोअर ऑर्डर मेथड्स. लोअर ऑर्डर कौन सा है? न्यूटन-कोट्स. तो न्यूटन-कोट्स को प्रिफर करते हैं ओवर गॉसियन. इसका मतलब सिम्पसन्स रूल जो है मोस्ट कॉमन इंटीग्रेशन मेथड है, एंड इसमें ये एज्यूम किया जाता है दैट व्हेन वी यूज सिंपलर मेथड, जो कि सिम्पसन्स मेथड है, देन द गॉसियन क्वाड्रेचर विद लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो जो एक्यूरेसी है वो हमें ऑब्टेन हो जाती है. ओनली थिंग वी हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स. इसमें अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन है टू अप्लाई द मेथड गॉसियन क्वाड्रेचर. इट्स मोर डिफिकल्ट टू यूज. और जब भी हम कभी दो मेथड्स को यूज करते हैं तो कंपेयर करते वक्त हमें व्हेन वी कंपेयर टू मेथड्स, वी कंपेयर their accuracy, reliability, ease of implementation, number of function, evaluations जो नेसेसरी हैं हमें उस इंटीग्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए, और जो CPU टाइम, कंप्यूटर टाइम यूज़ होता है, तब हम कहते हैं कि दिस मेथड इज़ बेटर, जिसमें ये सब मेजरमेंट के जो स्केल है वो फुलफिल हो जाए. क्राइटेरिया ऑफ बेटर मेथड. एक स्टडी में n को 64 लिया गया, क्योंकि n की भी कई वैल्यूज ली जा सकती हैं. तो कई बार क्या, जब n बहुत लार्ज हो गया तो वो फीजेबल ही नहीं रहता कैलकुलेशन करना, और इट मे बी टेकिंग मोर टाइम विच इज़ यूजलेस, और इट इज़ नॉट गिविंग
more accuracy after we have increased the number of points. So n is equal to 64 जो है एक good number of points है जो कि अच्छा result दे रहा है, more accurate. So at after certain point it is not advisable that keep on increasing the number of points, वो भी useless हो जाता है, and बहुत कम number of points भी accurate result नहीं देते हैं. So we have to find an optimum number of points which will give us the better or best result. So इस एक research study में ये पाया गया कि this is, so in one of the research studies it has been found that n is equal to 64. Gauss-Legendre quadrature formulae, बेसिकली गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले हैं, इसी का एक कंपोनेंट है लेजेंडर क्वाड्रेचर फॉर्मूले. सो गॉस लेजेंडर क्वाड्रेचर फॉर्मूले लेजेंडर पॉलिनोमियल पर बेस्ड है, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज गॉस लेजेंडर क्वाड्रेचर फॉर्मूले. गॉस लेजेंडर क्वाड्रेचर फॉर्मूला का डेरिवेशन या हाउ टू अप्लाई इट, वी सी दैट so Gauss integration increases the accuracy of numerical integration by picking optimal abscissas at which to evaluate the function. Means हमें कौन से xi की वैल्यू लेनी है और कौन से फंक्शन की वैल्यू लेनी है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. देन वी से दैट दिस इज द ऑप्टिमल आंसर और बेस्ट आंसर. तो जो इंटीग्रेशन है वो एज्यूम करता है अप्रॉक्सीमेट फंक्शन और फॉर्म ऑफ द फंक्शन, एंड ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम हर फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं -1 to 1 fx dx, एंड राइट हैंड साइड में समेशन ऑफ दीज w1 fx1 प्लस w2 fx2 एंड सो ऑन. समेशन के फॉर्म में ये, जहाँ की wi जो है वेट्स कहलाते हैं एंड xi जो है एब्सिस हैं रेस्पेक्टिवली. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू xi की लें जिसके कॉरस्पॉन्डिंग wi लें, एंड देन वी गेट दिस वैल्यू. तो यही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम एक मान लेते हैं कि fx जो एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 2n-1 है, और fx को इस फॉर्म में हमने लिया बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोम कांस्टेंट प्लस मींस x to the power 1 x square, these terms are there and last is x to the power 2n-1. ये एक पॉलिनोमियल हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं. नाउ वी राइट दिस because left hand side it is -1 to 1 this function fx dx. integrate कर लेते हैं term by term, and when we do integration after putting the limits we get this value, क्योंकि यहाँ पर आ गया c0x plus c1x square by 2 plus c2x cube by 3 and so on, and then we put the values -1 and 1 and we get these values. जैसे कि -1 and 1 पहले में रखा तो c0x था. आई होप यू कैन पुट -1 to 1, तो ये हो गया c0 माइनस प्लस c0, सो 2c0, एंड इसी तरह बाकी की टर्म. अब एट x इज इक्वल टू xi, हर वैल्यू x की जगह हम xi सब्सटीट्यूट कर देते हैं फंक्शन में. देन व्हाट हैपन्स, जो हमने अप्रोक्सीमेशन एज्यूम किया है उसमें राइट हैंड साइड में w1 एंड fx1 प्लस w2 fx2 प्लस wn fxn, and now this value we got here, this value we'll compare left hand side and right hand side.
this whole is. So now we put right hand side in the form that we collect the coefficients of C0, C1, C2 and up to C2n minus 1, and on left hand side we put the value which we had calculated, which is this one, and compare both left hand side and right hand side values, and we see that C0 is equal to W1 plus W2 plus Wn. This is the coefficient of C0 and here it is 2. So this whole term is equal to 2. Then next is this one, and this is equal to coefficient of C1, which is not here. So it is 0. Then C2, if we write, this will be square terms are there, which is equal to 2 by 3. Then C3 is 0. So next will be there the cube terms. So then 4 terms means x to the power 4 terms will be equal to 2 upon 5, and so on. And the last, because if we see it's an odd number, because odds are 0, C1, C3 and C5, these are 0. So this odd, it means coefficients of C2n minus 1, this is also 0. Now we have to solve this and get the value of W1, W2, W. So we take n is equal to 2. When we take n is equal to 2, only 2 functions are there, and we take polynomial, that is 2n minus 1, means 4 minus 1, 3. So degree of the polynomial is 3. Now we write these equations. These are general for n. When we take for 2, this is up to this. So W1 plus W2 is 2. Then in this also 2 terms will be there, 0. Here also 2 terms, which is 2 by 3. And in next it is 0. And after that there won't be any term because it is up to cube only. So we write we take W1 is equal to W2 is equal to 1, and when we put it into here or here, we get, it will be possible W1 is equal to W2 when we put here, then this becomes x1 plus x2 is equal to 0, which gives x2 is equal to minus x1 or x1 is equal to minus x2. So from this expression we get this term. And now when we put this term in this, we get W1, W2 are equal, so we can put them 1 or at least equal, so say W1, and x1 is equal to minus x2 or x2 is equal to minus x1. So when we make square of that, that becomes same. So this is 2 of W1 because both are W1, and we are taking them equal, and x1 square is equal to 2 upon 3. So 2 cancels out, and when we take W1 as 1, x1 becomes 1 upon root 3, which is equal to minus x2 or x2, this form. We can take any form, this form or x1 is equal to minus x2. Both of them are equal to 1 upon root 3. It means we put the value in this fx1 plus fx2, we get this expression. Now fx1 n is equal to 2 के लिए सॉल्व किया है, n में भी any value 3, 4, 5 etc. It's a general value. 3 के लिए सॉल्व करते हैं तो जब हमारा xi वैल्यूज x1, x2, x3 चेंज होगा, अकॉर्डिंगली w1, w2, w3 भी चेंज हो जाएगा. सो पिछले केस में हमने लिया था w1 is equal to 1, w2 is equal to 1 and x1, x2 are plus 1 upon root 3 with plus and minus sign.
सो ये लेजेंडर पॉलिनोमियल है जो कि nth डिग्री पॉलिनोमियल है. दिस इज स्पेशल फंक्शंस में आप पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है. दिस L0x इज इक्वल टू 1, L1x इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टीज इसकी सेटिस्फाई होती हैं. L2x इज दिस, then we have L3x also. So from here we get this term 0 which gives x1 x2 this one, same as we did earlier, and according to that w1 w2 is equal to 1. So we got this expression, and this is for n general one. Now for L3x we have this expression, and when we put it as 0 we take x common and we get 5x square minus 3 is equal to 0, which gives x is equal to plus minus under root 3 by 5. So तीन वैल्यूज आ गई. एक वैल्यू 0 है जो कॉमन ली थी, एंड दीज टू वैल्यूज. इसके कॉरस्पॉन्डिंग w की वैल्यू भी चेंज होगी, बिकॉज यहाँ से हम तीन वैल्यू लेंगे, w1 प्लस w2 प्लस w3 इज 2. देन यहाँ से भी तीन टर्म एंड यहाँ से भी तीन टर्म, एंड व्हेन वी कैलकुलेट w वी गेट दिस एक्सप्रेशन. So ये स्टैंडर्ड है. once calculated we will, for n is equal to 4 we will get different values of w1 w2 w3 w4. Now this is the right hand side where we have calculated xi's and wi. What about the left hand side which is from -1 to 1 fx dx? मतलब कि हमें जो फंक्शन दिया गया उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो किस तरह से कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि इसी फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन. सो हाउ डू वी डू, जो हमें फंक्शन दिया गया है वो इंटीग्रेट करना है a to b fx dx. इस फॉर्म में इंटीग्रेशन दिया गया है. इसे हम लिख सकते हैं c -1 to 1 gz dz, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए फंक्शन. सो इसके लिए x को एज्यूम करते हैं az प्लस b एट x इज इक्वल टू a, z is equal to -1 because we put here x is equal to a. So this becomes a is equal to a. Here it is -1. We know we have taken -1. So a -1 plus b. And from here we can see, this is by observation, that when x, because it is with respect to x, so when x is equal to b we have z, so it is 1. So when x is equal to b, z is 1. This is the assumption we can say. Now this gives a small a, this is what is written here, a is equal to b minus a, and when we put b it gives b plus a. So from here we get the values of a and b by solving these two equations. Once we got a and b, we can write value of x. So x is equal to this much, b minus a by 2 z plus b plus a by 2, and differentiate it, we get this value. We put this value in the right hand side. So this was the integration, and this gives dx. We can write b minus a by 2 dz, and rest is this, and b minus a by 2 is equivalent to capital C. This formula is optimal because it fits all polynomials up to degree 2n exactly. Now let's do one example. We have to integrate 0 to pi by 2 sin x dx. So here limits a is 0, small a is 0, small b is pi by 2, and fx is sin x dx. Here n is 2 because 2 term formula means n is equal to 2. So we write here c is this, the standard which we got we have written directly, and then we put b minus a by 2 is pi by 2 minus 0 by 2,
and this form is here. 2-point formula, this is the value of x, we have already know. So we write x is like this, pi by 2 by 2 means pi by 4, z plus pi by 4, dx we can write, and this becomes this formula, dx is pi by 4 dz. So pi by 4 dz, and this is sine of this, and we write in the form of 2-point formula, pi by 4, and this is f(x), x is this, so f of x plus f of minus x is here, and this is plus x, which when we calculate, because f is what, sine, when we put sine function along with this value we get this value, and this is the integration. Thank you. For n is equal to 4, L4x will be 0 and L4x की वैल्यू यहाँ दी गई है, एंड when we solve the equation एब्सिसा की वैल्यू मिल जाएगी, and to the power half, this to the power half. Then we have this table, n is equal to 2, 3, 4 plus minus xi and wi. So इन वैल्यूज को यूज करके हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. जब लिमिट्स चेंज हो जाती हैं तो ये वैल्यूज जो हैं प्लस माइनस xi प्लस माइनस zi की तरह यूज की जाएंगी. सो वी यूज दिस वैल्यू एज प्लस माइनस zi. सो मान लीजिए n इज इक्वल टू 4 है तो प्लस 0.33 एंड दिस वैल्यू एंड माइनस 0.33 ऑल्सो, and plus 8611 etc. and minus 8611 etc. So ये इस तरह से यूज होंगी दोनों वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग. इस एग्जांपल को सॉल्व करना है. I is equal to 0 to 1x dx. सो जैसे कि हमें पता है कि पहले लिमिट्स चेंज करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दिस इज a विच इज 0, b इज 1, तो यहाँ पर b1 1/2 z, and this is 1/2 because a is 0. तो ये वैल्यू अप टू n हो गई. एंड अब लिमिट्स जो हैं i की जब वैल्यू लिखेंगे, सो b माइनस a/2 दैट इज 1/2 एंड इंटू 1/2 1/4 माइनस 1 to 1 z प्लस 1, ये हमने कन्वर्ट करके फाइंड आउट किया. दिस z प्लस 1, this value z plus 1, so z plus 1 dz which is equal to 1/4. क्योंकि अब ये इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. wi fzi, I is 1 to n, n is 4, so fzi क्या है, zi plus 1, ये fz है, z plus 1 I है तो zi plus 1, n is equal to 4. तो अभी जैसे पीछे हमने टेबल में प्लस माइनस xi देखा, उसे प्लस माइनस zi की वैल्यू, सो 1/4 ये 0.86 प्लस के साथ, एंड यहाँ पर माइनस के साथ एंड यहाँ प्लस के साथ. सो दिस इज z plus 1, दिस इज z plus 1, दिस इज माइनस z plus 1 एंड wi. फिर दूसरी वैल्यू 0.33 के साथ थी तो प्लस एंड माइनस, एंड z प्लस दैट इज xi, देयर इट इज रिटन, एंड प्लस 1 एंड देन दिस इज wi. ये एक एग्जांपल लेंथ ऑफ आर्क पर है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क, एंड इस पर सिम्पसन्स 1/3 अप्लाई किया गया है. सो आई थिंक यू मे डू इट योरसेल्फ. थैंक यू.